Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone, world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are, world over, in different countries, in different continents, in different time zones. It's a green morning, green afternoon, and green evening to everyone. Thank you very much for joining us from world over. Thank you very much for being a part of our entire efforts and this journey. We all have come a very long way, and today is 1910th webinar since 25th of March 2020, when the pandemic was declared and there was a complete lockdown in the country. Sahib Preet Kaur, she's the first to join today, and Sahib Preet Kaur, she gets the reward this evening, being the first on the YouTube. Ladies and gentlemen, we extend a very warm welcome, and through the Digital Inspirational Lab, DIL, दिल का फुल फॉर्म, जैसे देखिए आजकल एक रिवाज है नीति आयोग, नीति की अगर आप फॉर्म देखोगे तो इंग्लिश में है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन है नीति। वैसे ही हमने भी दिल से बात की है, कर रहे हैं, और दिल की फुल फॉर्म है DIL, D for digital, I for inspirational, and L for lab, laboratory. So digital inspirational lab. कभी हमने जानने की कोशिश की, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी चीजें, इतने टीचर, इतने काउंसलर, इतने कोच, इतने मेंटोर, इतने प्रिंसिपल, इतने डायरेक्टर, ओ माय गॉड, सो मेनी बुक एंड सो मेनी सब्जेक्ट। ये जानने की कोशिश की कभी बच्चे क्या चाहते हैं, व्हाट डज यूथ वांट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूथ, यूथ को क्या चाहिए, दे आर ऑलरेडी वेरी क्रिएटिव। कैन वी बिल्ड देयर कैपेसिटी, कैन वी डू यू अंडरस्टैंड अ टर्म कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए एक कमरा है और उस कमरे का साइज ऐसा है कि उसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं इत्मीनान से, अच्छे से, अपनी चेयर के साथ, ठीक से, एग्जैक्टली दे कैन। अगर हम उस 50 बच्चों की जगह उस कमरे में 100 बच्चों को भर दें तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी का क्या होगा, कचूमर निकल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, ब्रेथलेसनेस होगी, प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी। एट द सेम टाइम अगर एक क्लास में 30 बच्चों की कैपेसिटी है लेकिन बैठे 10 हैं, ब्रीदिंग स्पेस भी है, सब कुछ है, वर्ल्ड ओवर क्या रेशियो है ये अपने आप पता कीजिए, क्या प्रिस्क्राइब्ड रेशियो है, व्हाट शुड बी द रेशियो टू द स्टूडेंट टू द टीचर, एक टीचर के प्रति एक क्लास में कितने बच्चे आने चाहिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी ऑल हैव टू रियलाइज। जब आप उस चीज को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ आएंगी। साहिबप्रीत कौर के साथ साथ Sakshi Chauhan, you are a regular visitor. Thank you very much. You join us from Uttarakhand. We extend you a very warm welcome. आज का हमारा डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब मेकिंग एजुकेशन एंड स्किल रेलिवेंट के अंदर जो टॉपिक है, योर क्रिएटिव कैपेसिटी, योर कैरिंग कैपेसिटी नहीं, योर क्रिएटिव कैपेसिटी। सबसे पहले आपके अंदर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के बाद आपकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के बाद आपकी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के बाद आपकी इनोवेशन, इनोवेशन के बाद पूरी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके हाउ कैन बी यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर एवरीबडी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल हैव टू रियलाइज। लेट्स मूव अहेड, let's take on today's topic. It's very interesting. You will have lots of things and we will quickly go over कि डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब में जब योर क्रिएटिव कैपेसिटी की बातचीत करते हैं तो उसमें क्या क्या है। आइए, सबसे पहले you got to take an understanding that ICSI, International Chamber for Service Industry, is a link between India and our Indians, those have gone abroad. There are 32 million brothers and sisters, those have gone across the globe in 131 countries. अब उनके साथ भी तो कोई जुड़ना चाहिए, उनकी भी तो इमोशंस हैं, उन्हें भी अपनी कोलैबोरेशन और सब चीजों को लेके आना है। तो जब हम उस चीज की बातचीत कर रहे हैं तो आइए,
सबसे पहले every youth, every teacher, anybody whosoever is in this universe, believe in your creative capacity. And that lies at the heart of what? Innovation. Innovation की जरूरत है, हर जगह improvisation की जरूरत है, innovation की जरूरत है, कुछ नए तरीके से पैकेजिंग की जरूरत है. जो पुरानी एजुकेशन का सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल इरा में आया, that needs a change, that needs a complete change. जब हम उसकी बातचीत करते हैं तो let's see what exactly is that, how is that, और उसको हम कैसे लेकर चलें. That's what we will talk about now. First of all, clear your mind. अपने दिमाग के सारे जितने भी बादल हैं उनको निकाल दीजिए, छांट दीजिए. Clear your, clear your mind to recover focus. Increase your creative thinking capacity and expand your memory, concept illustration, and what exactly do you want to do in life? What do you want to become in life? What exactly you are fond of in life? अब योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी इस सब की बातचीत करते हैं. हम इसकी क्रिएटिव कैपेसिटी की बाद में बातचीत करेंगे. नाउ हाउ टू इंक्रीज योर क्रिएटिव कैपेसिटी? हाउ कैन यू इंक्रीज? कैन इट बी इंक्रीज्ड? Certainly it can be increased. Which way it can be increased? How to increase? आइए, जो creative capacity है, it is the ability to come up with or recognize the ideas to solve the problems, communicate with others, or entertain. Be happy whatsoever you are doing. Be energetic whatsoever you are doing. And whatsoever you should do, you should be exceptionally good in that. एंड उसको इंप्रूव करते रहिए. जितना इंप्रूव करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जो क्रिएटिविटी है, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज, न्यू मेथड्स, न्यू मेथडोलॉजीज ऑफ सॉल्विंग व्हाट प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचिंग डिफरेंट सिचुएशंस. क्योंकि लाइफ में अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियां आती हैं, वो एक जैसी नहीं रहती. दैट इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू थिंक. यहां पर साहिबप्रीत लिख रही हैं बाय थिंकिंग ब्रॉडली. साक्षी लिख रही हैं इंटरेस्टिंग इमेज. क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रही हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रही हैं, स्किल्स और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बातचीत कर रहे हैं. ओके, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन. सो क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज of solving the problems and approaching new situations. This isn't a skill restricted to artists or musicians or writers. No, 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 no. It's for everybody. And you all can increase your creative capacity. It is useful skill for people from all walks of life. ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ कुछ लोगों की जरूरत है, ऐसा नहीं है. It is everybody. Now, how to increase creative capacity? Now, first of all, the first step, increase creative capacity, is to devote yourself to developing your creative abilities. आपकी creative abilities क्या क्या है? हर इंसान को पता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, किस में मेरा bent of mind है, किस में मेरा aptitude है, attitude है, interest है, inclination है. उन सब चीजों को लेकर चलते हैं. Do not put off your efforts. Always keep trying. Set goals. Enlist the help of others. And put aside time each day to develop your skills. Skills से कहां जाएंगे? Competencies. Skill क्या होती है? एक. Competencies क्या होती है? जो बहुत सारी skills हो. So skills to competencies. Competencies to capabilities. Capabilities to talents. बहुत सारी चीजें हैं. हम इसके अलग अलग वेबिनार में आपके साथ बातचीत करेंगे. अब एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, शेड्यूल ए टाइम. और देखिए, किचन में, बाथरूम में नहाते हुए, चलते हुए, कॉलेज जाते हुए, किसी भी जगह, स्कूल जाते हुए, जहां भी टाइम मिलता है, गुनगुनाइए. फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड. जस्ट इंप्रूव योर स्किल्स. You got to polish one's skills. That's what Sahibpreet is writing. Yes, that's appreciable. That's appreciable. You got to see. Now, how do you boost your creativity by becoming an expert? किस तरीके से आप करते हैं? चलिए, सबसे पहले, जैसे आज का एक सेशन था दोपहर को 2 बजे, you were asking good questions. You're replying very well. So first of all,
You must ask questions, and you must ask intelligent question. No question is poor, no question is bad, no question is rich, nothing of that sort. Number two, become an expert in your area. Whenever you go to somebody, इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं, आप यू क्यों कहते हो कि ये बताइए कि इस शहर में, इस सेक्टर में सबसे अच्छा दांतों का डेंटल सर्जन कौन है? आप एक्सपर्ट को क्यों ढूंढते हैं? सो फाइंड योर निश, माइक्रो निश। आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज के करने में आपको थकावट नहीं होती है? एक्सप्लोर योर क्यूरियोसिटी, step away, take off the time, generate new ideas, identify your best ideas, go to the public and take your ideas to the public, mix them, blend, fuse various ideas, उन सबको इकट्ठा कीजिए और उसके बाद देखिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। So, one of the best way to develop the creative capacity is to become an expert in the area of your interest. By having a rich understanding of the topic, you will be better able to think, develop, polish, and at the same time, take out the innovative solutions for various problems in that particular area. One way to develop the expertise is by reading about creative people, listening to them, speaking to them, talking to them, sharing your vision with them, sharing your ideas with them. That is something very important. Now, we have also been joined by Julie Subba ma'am from Manipur. We extend her Komal, hearty welcome. 120, Komal, great. And then we have got who else? Let me see. Ruhina, great, hearty welcome. Nidhi Gupta, hearty welcome. And let me see. Abhilash Kamli, great, great. B2J, namaste, sir. Thank you. And फिर उसके बाद है Nancy, thank you. And और कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? Let me just see, so that nobody should be left over and everybody should feel, important. Komal Mehra, okay, great, thank you. Now innovation, हर कोई बातचीत करता है। रिवॉर्ड योर क्यूरियोसिटी, जो आपके अंदर क्यूरियोस, जब तक अंदर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना, क्रिएटिविटी तो सेकंड स्टेज पे आएगी। सबसे पहले अच्छे टीचर का काम है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लाना। ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ओ माय गॉड, दिस कैन आल्सो बी द सॉल्यूशन। एंड बी द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। नेचर के साथ बातचीत कीजिए। हमारे एक प्रोफेसर हैं सत्येंद्र धीमान, हर संडे वुडबरी यूनिवर्सिटी बर्बैंक कैलिफोर्निया से सुबह 9:30 जुड़ते हैं। वो जब वॉक के लिए जाते हैं ना, तो पेड़ों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग नीम के पेड़, कैसे हो आज तुम, कैसा चल रहा है? आज तो तुम्हारे पत्ते बहुत हिल रहे हैं, आज तो तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो, आज तुम म्यूजिक सुना रहे हो, give me your melody. That is the way he talked to trees. And he's such a wonderful, amazing person. You don't know, this universe is comprising, हम अकेले अलग से नहीं हैं। The flora and fauna, the animals, किसी भी तरीके के herbivores, carnivores, और किसी जगह भी चले जाओ, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड एनिमल्स, किसी जगह भी हर इंसान को, हर जीव जंतु को, दे आर द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। और ये जो सारी सृष्टि है जिसने ये रची है, जो यूनिवर्स का विधाता है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड what a human brain he has created and what a human beings he has created. एक लाइफ के अंदर आपकी लाइफ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। You should contribute something substantial on this planet, on this, earth. Something you should contribute substantial. Okay. One common जो road block होता है to developing, the creative capacity is the sense that curiosity is an indulgence rather than reprimanding yourself for the following an internet rabbit hole. Reward yourself when you're curious about something. Give yourself the opportunity and time to explore new topics. Time निकालिए, टाइम निकालना पड़ेगा। सोना आधा घंटा कम कर दीजिए। That is something very, very important, Now, yes, sir, exactly. This my mamaji do. He also trained his son. He's just 6 years old and he talked like this.
says Saint Shri Akal to tree, horse, or any other animal. Yes, yes, yes. That is something which you got to understand. Now, एट द सेम टाइम एक एडवेंचर होता है, मैं तो एडवेंचर टूरिज्म की बात करता हूं, एक सॉफ्ट एडवेंचर होता है, एक हार्ड एडवेंचर होता है। अगर मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूं, नॉर्मल पेस पे जा रहा हूं, जंगल में वैसे ही वॉक कर रहा हूं, तो इट्स अ सॉफ्ट एडवेंचर। लेकिन अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग कर रहा हूं, कयाकिंग कर रहा हूं, कैनोइंग कर रहा हूं, स्कूबा डाइविंग कर रहा हूं, स्नॉर्कलिंग कर रहा हूं, एरो स्पोर्ट्स कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग व्हाट, हार्ड एडवेंचर। अब ये देखिए, ये बच्चा यहां पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। नाउ हाउ टेकिंग रिस्क कैन लीड यू टू अ बेटर लाइफ, बिकॉज यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। ही विल फाइंड द सोल्यूशन। नीचे वाटर है, इसको क्लाइंब करके ऊपर आना है। ही विल फाइंड द रिसेस, ये कोने ढूंढेगा, किनारे ढूंढेगा, कोई नुकीली जगह ऐसी ढूंढेगा जहां हाथ पड़ जाए। when it comes to building a creative skills, you must be willing to take risk to advance your abilities. That is something very important. Although your efforts may not lead to success every time, but you will still be boosting your creative talents and building your skills that will serve you well in the future. आज नहीं तो कल जो प्रयास आप कर रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। You got to understand from that point of view. शेयरिंग करते हैं, जैसे your work in a creative writing course might feel intimidating, but the critique you receive from the classmates and teachers can be invaluable. देखो, इसे इंप्रूव करो, इस पैरा को इंप्रूव करो, ये शेर तो तुमने अच्छा लिखा है, लेकिन इसका जो निचोड़ है ना, थोड़ा सा यहां इसको, ये शब्द को पहले लगाओ, इसको बाद में लगाओ। You get lots of permutation combination from the society. You have to understand from that point of view, build your confidence. That is something very important. Living with the fear that stops us taking risk. And if you don't go out, you've got to go out. You got to take the calculated risk. On the branch, you will never going to get the best fruit. अगर आप टहनी पर जाओगे ही नहीं, टहनी पे आगे नहीं निकलोगे किसी पेड़ की, तो जो फ्रूट दूर लटका हुआ है वो आपको कैसे मिलेगा? So insecurity in your abilities can surpass and it can suppress creativity, which is why it is important to build confidence. Note your progress, commend your efforts, and always be on the outlook for ways to reward your creative capacity. That is the way you have to think about it. Okay, we have been joined by Savitaj, Priya Dadwal, and Sakshi, of course, from Uttarakhand. Hearty welcome to all of you. Those are joining here. Thank you. Now, एक बात समझ लीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज को करने में आपको थकावट नहीं होती है, उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, टेक आउट द टाइम फॉर योर क्रिएटिव कैपेसिटी. You won't be able to develop your creative talent if you don't make time for that. That is something very important. आप schedule बनाइए, schedule some time each week to concentrate on some type of the creative capacities of various projects, whatever you want to do. Making time for creative capacity जो है, it might involve saying no to some things that are draining your valuable and available time, or even choosing to let go of the things of your schedule that are not bringing joy to you. अरे वो कीजिए ना जिसको करने में आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है. That is something very important. और दूसरा, नेगेटिव एटीट्यूड को ओवरकम कीजिए. You should not have a negative attitude. और अगर आपके आसपास के दोस्त भी नेगेटिव है, नेगेटिव बातें करती हैं, देखिए, आप सब कुछ नहीं बदल सकते, आप सबको नहीं बदल सकते, हर वक्त सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास की जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसको आप नकार सकते हैं, हटा सकते हैं. बिकॉज देखिए, जैसा माहौल होगा, जैसे दोस्त होंगे, जैसी कंपनी होगी, जैसी बातचीत होगी, आपके विचार, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी भी उस डायरेक्शन में जाएगी. सो फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म. कभी कभी आप अपने आप से भी बातचीत करते हैं और आप कहते हैं
ये तो मैं अच्छा कर सकती थी, ये मैंने क्या किया। फिर उसके बाद अपने आप को ही आप कोसने लगते हैं। कम ऑन, डोंट रिग्रेट, जो हो गया उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज बड़ा अच्छा गाना था वक्त मूवी का, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, कर ले पूरी आरजू। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, यू नो, कहां कहां पर रोड ब्लॉक्स हैं, कहां कहां पर डिफिकल्टीज हैं विच यू हैव टू ओवरकम। When you find yourself dwelling on negative thinking, make an active effort to challenge those faulty ideas and replace them with the more realistic, positive ones. That is something very, very, it's an art which you have to develop. You have to think about it and always remain positive. जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, आप एनर्जेटिक रहोगे, आप थकोगे भी नहीं, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और देखिए, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है ना, और एक ही टाइम में कितने सारे बच्चे पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में पैदा होते हैं, लेकिन सब अपना भाग्य लेकर आते हैं, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। और दूसरा, मुझे बिल गेट का एक सेंटेंस हमेशा याद रहता है, इट इज इट इज नॉट इन योर हैंड्स टू बी बॉर्न पुअर, बट इट इज अ कर्स इफ यू डाई पुअर। क्योंकि इसका मतलब आपने जीवन में प्रयास नहीं किया। Fight fear of the failure, the fear that you might make a mistake or fail in your efforts can paralyze your progress. Whenever you find yourself harboring such feelings, remind yourself that mistakes are simply part of the process. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है। While you may occasionally stumble on your path to creative, the capacity, but you will eventually reach your goal, whatsoever you have set for yourself. You'll overcome your fear, you'll overcome your failures, and this is the complete process. It is given over here. I'm not spending too much of time because time paucity is there. मैं आधे घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम नहीं करना चाहता, सो ये YouTube पर जा रहा है, आप पॉज करके अपने टाइम में खुद से देख सकते हैं। नाउ, ब्रेनस्टॉर्म द न्यू आइडियाज, ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपके दिमाग में कुछ चलता रहना चाहिए। सेट द डायरेक्शन, स्टे फोकस्ड, इन्वॉल्व एवरीवन, इनवाइट न्यू आइडियाज, लुक फॉर वेरियस आइडियाज, वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, क्रॉस फर्टिलाइज, सस्पेंड जजमेंट एकदम मत लीजिए, आस्ता आस्ता स्टेप्स लीजिए, सब कुछ लीजिए। और दूसरा, अगर रिपीट भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार सक्सेस नहीं मिलेगी, दूसरी बार, दूसरी नहीं तो डोंट स्टॉप and always share idea, display ideas to whom you trust, because unless you don't share, you will not be able to move. So encourage your students to share ideas, help your students to group work skills, encourage your students to learn from each other, improve your students confidence, give you feedback on what misconceptions your students have, show you what your students already know. कई बार बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन इंप्रूव। एक्सप्लोर मल्टीपल सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम्स हैं, फ्यूचर्स हैं, पीपल है, फैक्ट्स है, सॉल्यूशंस भी आएंगे। द नेक्स्ट टाइम यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, try look for a variety of solutions. Instead of simply going with the first idea you have, take the time, think deeper, go deeply, other possible ways. What else can be done in this situation? This simple activity is a great way to build both the problem solving and creative thinking skills with creative capacity, which you all have to realize. चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 मिनट और हैं। यूज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। एजुकेशन के अंदर ये सब आपको समझना पड़ेगा। माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जो माइंड मैपिंग है, इट इज अ वे टू कनेक्ट आइडियाज एंड लुक फॉर इनोवेटिव आंसर्स टू क्वेश्चंस। क्रिएट ए माइंड मैप बाय राइटिंग डाउन ए सेंट्रल टॉपिक और द वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लिंक रिलेटेड द टर्म्स और आइडियाज अराउंड द सेंट्रल वर्ड। एंड उसके बाद, while similar to brainstorming, this technique allows for branching ideas and offers a very visual way of seeing how ideas can be linked with each other. Visualize. Or time management, very important. This is a very nice flow chart in your own time.
is coming on the YouTube. You can see it, you can enjoy it, see it for yourself. Now, निधि भी कुछ लिख रही हैं. Yes, sir. Conquering our fear of failure is actually required in each one of our life. Yes, that is there. We all have to understand. Sahib Preet is writing, learn from mistakes and grow. Great. So आगे चलते हैं. Challenge yourself and create opportunity. ये देखो, ये छोटा सा बच्चा नीचे पहले स्टेप पे खड़ा है. Challenge yourself every day. अपने घर से कॉलेज के लिए जब सुबह निकलो, तो आज मैंने नया क्या करना है? What I am going to add to my skills, my competencies, my talent, my hobbies, my attitude, my bent of mind, how I'm going to be more positive, how I'm going to be surrounded with good friends, positive friends, and मैंने एक मिनट भी इधर उधर की गॉसिप मैंने नहीं करनी. जिन चीजों का कोई रिजल्ट नहीं है, न्यूज हम देखते हैं टीवी के ऊपर, ऑल नेगेटिव, एवरीथिंग डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया वो हो गया, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अस एनीथिंग. We got to understand how I can add value in this universe. Once you have developed some basic creative skills, it is important to continually challenge, yourself to further advance your capabilities, your abilities. Look for more difficult approaches. Try out new things. Avoid always returning to the same solutions which you have used in the past. In addition to challenging yourself, you also need to create your own opportunities for creative capacity. This might involve tackling a new project, new solutions, or finding new tools in your current projects as well. That is the way we have to take. Now, find inspiration to boost creativity. Never expect creativity to just happen. Look for new sources of inspiration that will give you fresh ideas and motivate you, generate unique answers to the question. Read a book, go to the museum, go for the movie. ऑडी में देखो, अभी 23 तारीख को नई पिक्चर आ रही है सलमान खान की. लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, एंगेज इन ए लाइवली डिबेट, मीट गुड पॉजिटिव पीपल, मीट योर फ्रेंड्स, यूज वट एवर स्ट्रैटेजी और टेक्निक वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. हम सब अलग अलग हैं, हम सब की सोच अलग अलग है. Do you enjoy video games? Research indicates that playing video games can help increase your creative capacity. इसको मैंने बहुत तरीके से गहराई में जाके कुछ एक जापानीज गेम के ऊपर स्टडी की है अभी. I will share some other day with you in webinar. Let's go further. Consider alternative scenarios. ठीक है? It's always identify driving forces, identify critical uncertainties, develop plausible scenarios, discuss implication and different paths. When approaching a problem, ask what if questions to consider each possible scenario. If you take a specific approach, what will be the outcome? Just talk to yourself. Try the snowball technique. आपने देखा है वो बाउंस करके कैसे 1 से 2, 2 से 22, 22 से 44, 44 से 66. All that. Have you ever noticed how one great idea often leads directly to another? You can take advantage of this by using a snowball technique. It's very important. What stimulates the creative thinking or creative thinking capacity? Strategies that can help stimulate creative thinking or creative capacity. It includes challenging yourself to think about things differently, not the way everybody is thinking. What is it? Who it's for? Who are you talking to? How it works? What you need? How to access? Why? How? What? Lots of creative thinking and creative capacity building. How can I improve my creativity, imagination? Learn through collaboration. Do something you love. Find inspiration from other industries as well. Unplug yourself. Walk, talk. Set the right mood. Positive raho, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बुढ़ापा देर से आएगा. Use the 6 thinking hat techniques. Ask for advice or feedback from others. Pick up a terrible idea and work on to that the best possible way. ये देखिए कितने सारे आइडियाज आ रहे हैं, कितने सारे आइडियाज निकल रहे हैं. Oh my God, आइडिया ही आइडिया आ रहे हैं. Harnessing a patient's creative capacity.
ये पेशेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब कहते हैं ना इम्बैलेंस, अब उसको कहो आई एम बैलेंस, आई एम बैलेंस, creative self, stability, flow of life, and power. You have that power. You got to work on that. The role of creative capacity in the 21st century. You all got to understand individual differences क्या है, environmental factors क्या है, creativity क्या है, creative capacity क्या है, और उसके creative capacity के outcomes क्या हैं. We got to think. So, ladies and gentlemen, the best way to describe your total creative capacity is to say that for all practical purposes, it is infinite. That is the way. Before pandemic, हम लोगों ने इंस्पिरेशनल एक आप लोगों के लिए फिनिशिंग स्कूल बनाया था, जिसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एंड नो स्ट्रेस, नो ड्रग्स, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, ये सब चीज एक ब्रिक एंड मोटर वाला था। और ये सब कुछ था ग्राउंड पे, जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल, इट्स एन इंस्पिरेशनल एंड इट इज ऑल डिजिटल वे। टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करो। 24 घंटे खुदा ने सबको बराबर दिए हैं। ट्राई एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट। ये हमारे चेंबर ने, आईसीएसआई ने डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब, जब दिल से आवाज आती है और दिल तक पहुंचती है तो बहुत सारी बातें समझ आती हैं, और कई बार आप बोलते भी नहीं हैं, बगैर शब्दों के भी समझ आता है। सो दिल की बात सुनिए और देखिए, 3 चीजें हैं, हेड, हार्ट और हैंड्स। हेड, हार्ट एंड हैंड्स, 3H फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और कॉन्टिन्यूस लर्निंग कीजिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। मैं हर रोज नया कुछ सीखता हूं, हर रोज नया कुछ सीखता हूं, बिकॉज एवरी डे एंड आई लर्न फ्रॉम स्मॉल किड्स ऑल्सो, आई लर्न फ्रॉम एल्डर्स ऑल्सो, आई लर्न फ्रॉम माई कलीग्स ऑल्सो। I am hungry child. I want to learn from everybody whatever best I can. Make education and skills relevant. ये हमारा एक स्टार्टअप है दिल, जो है डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब। ये इनोवेटिव एजुकेशन के लिए है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के लिए है, कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स के लिए है, पैशन टू प्रोफेशन के लिए है, ऑल डिजिटल वे। That is the future leap, what we are talking about. So capacity of the teachers and capacity of the youth has to be taken care of. This is the homepage of the web portal icsiindia.in. बहुत सारी अच्छी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी जब आप जाएंगे। और आज का प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको 1 मिनट के लिए डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब का ट्रेलर देना चाहता हूं। Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. ये मैंने सिर्फ आपको एक चीज दिखानी थी, सो दैट यू गेट एन आइडिया। उसके बाद एक चीज हमेशा सोचिएगा, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. हम रोजाना बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंटीमेशन एडवांस में मिल जाएगा। You need not to wait for the creative and all. The moment we go live, you can come to know. So thereby, I would appreciate if you subscribe, like, share. और देखिए, कल दोपहर को 2:30 बजे 2:30 there's a special program in Sector 20 Government B.Ed College, to which we have adopted, and we are bringing Inspirational Lab, the complete concept over there. We want this should become a pilot project for the whole country and thereafter whole Asia. So tomorrow 2:30 onward, we'll have a special program, capacity building program for transformative learning. उसके बाद कल शाम को
3 लाख वैकेंसीज हैं जापान के अंदर। अगर आपका इंटरेस्ट है जापान जाने का और आप फ्री में जापानीज सीखना चाहते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, टुमारो इवनिंग 5 PM यू कैन ज्वाइन। और परसों सैटरडे को जो इंसान, जो प्रोफेसर इस कंट्री में डिजिटल एजुकेशन लेकर आए, ही इज द फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। ये पहले हैं जिन्होंने सबसे पहला सॉफ्टवेयर एजुकेशन में डिजिटल वे में इस्तेमाल किया, एंड ही इज गोइंग टू टॉक टू अस। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल सैटरडे 22 अप्रैल को 8 बजे रात को ये बात करेंगे, और हम 5,000 रुपए के कैश प्राइजेस कल दे रहे हैं। द वेरियस क्वेश्चंस विच ही विल बी आस्किंग, if you reply them on the YouTube correctly, then you get the reward and you get the honor and you get recognition. Sunday सुबह 9:30 we will be going to Woodbury University all the way to California, USA. विद्या से अध्यात्म विद्या की और शाम को आयुर्वेदा फॉर मेंटल वेलनेस, ये शाम को 7 बजे संडे को 23 अप्रैल। और रात को 8 बजे, if you are interested about Canada, there's a lot of demand for caregivers as profession, and that is part 2 we are going to cover on Sunday evening, all the way with the 2 speakers from Canada, and they will be talking to us and they'll be sharing the vision. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this particular program. Look forward to meeting you tomorrow in the afternoon at 2:30. अब जो लोग जुड़े आज नए, पराश शर्मा, हार्टी वेलकम। निधि, मैंने आपका नाम पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद निधि के कमेंट्स भी हैं, इट्स ऑफन द स्मॉल स्टेप्स और द थिंग्स वी डू दैट ब्रिंग अबाउट द लास्टिंग चेंज एंड द पॉजिटिवली टू अस। ग्रेट। शिवांगी सिंह, she also joined us today, hearty welcome, thank you. And Savitaj Kaur, also with focusing even for some time on things you like, then it becomes easier to take part in things which might not generally interest you. Yes, absolutely, absolutely. और इसी के साथ साथ the last one we got from Sahibpreet, and thank you very much everybody joining us. It's such a pleasure to meet all of you. और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हम लोग मिलके करें कि एक नए समाज की स्थापना, जहां पर जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं ना, दे कैन ब्रिंग सो मच ऑफ चेंज। हमारे यूथ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन हमको सुनना पड़ेगा व्हाट डज यूथ